रेखा, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं ये सेशन चालू करता हूँ। खारघर में मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है ना? कॉल करो सबको। नहीं, आप देख लेना। तो मैं वेट नहीं कर सकता। आई थिंक सारा इज देयर। सारा पुट ऑन योर वीडियो। मैं लेक्चर चालू करता हूँ। कोई आएगा तो फिर वैसे अलाउ करना। चलो, सो इट्स ओनली यू राइट नाउ सारा। सो लेट अस स्टार्ट दिस। क्या करने वाले हैं हम लोग? सो वी आर डूइंग chapter 9 essentially from your book, which is about statistics, mean, median, mode, sample, surveys, box and whisker plot. And I will start with box and whisker plot because as I remember when I met last inside this classroom, मैंने box and whisker plot पे start किया था and we started talking about percentile and stuff, right? So were you there in that class? ठीक है, good. So let's start with from where I left off. If I have preserved it right, मुझे एक बात बताओ, ये मैं शो करता हूँ तुम्हारे साथ. Let me share this and let me put this as spotlight for everyone. Sir. You remember doing this sheet with me? Yes, sir. This one. So इसमें we talked about a concept called as percentile, where we said that you divide something into 100 equal quantities, and each part, because you're talking about equal quantities, each part is representing 1% of the data. So if I have 10,000 entities, 1% of that would be 100. So each part is having 100 entities. और ऐसे 100 parts हमने बना लिए, 10,000 हो गया, and so on. इसको एक order में arrange किया. Quartile means when you divide something into 4 equal parts, each part representing 25% of that thing. ठीक है, अगर ये सब पता है तो I will start with box and whisker plot, and before I start with box and whisker plot, we'll do 4 concepts quickly. So Kesar Patil, please put on your video. आप लोग लिख रहे हैं मेरी क्लास में. चलो, so पहले आते हैं mean पे. Kesar, help me understand what is mean. What do you mean by mean? Unmute करके बोलो. Sum of every given number upon number of numbers. Yeah. So basically what you're saying is this is like an average, or this is a simple average where you're talking about sum of all the quantities or numbers. Let's say there are n such quantities divided by number of quantities, in this case n. This is mean or simple average. This is also called a simple average. Okay, where you are doing summation of x I, where I goes from 1 to n divided by n. ऐसे भी लिखते हैं इसको. So this is mean, right? What do you mean by mode? Sarah? Yes, sir. Mode. The most frequent observation we find in a table, like in a given. Most frequently occurring observation in a data set. So if my data set has values like 11, 10, 9, 15, 13, 15, 12, 12, 15, 20. So I can see 15 is the value which has occurred most frequently, and hence mode of this data set is 15. If there are two values which occur most frequently, then it becomes a bimodal data set. ये सब unimodal है. अब SAT में unimodal ही आता है. You don't deal with bimodal, so you don't have to worry. But the point I'm trying to tell you is your data set can be having more than one mode. So let's say अगर एक और 12 आ जाएगा, तो 12 भी mode है, 15 भी mode है. The data set is bimodal. समझ में आया? But SAT में unimodal data set आएगा, मतलब वो data set में अगर mode का question है
तो मोड एक ही होगा उसका। ओके केसर, चलो लेट्स गो टू मीडियन। बोलो केसर। Number which is in middle, starting from smaller to greater numbers. Okay, so it is in an arranged data set. एक data set को arrange करना पड़ेगा पहले. This could be arranged in ascending order or descending order. In this arranged data set, you are looking for the middlemost value. You are looking for the middlemost value. So if I have odd number of data sets, middle value निकालना easy है. मान लो I have 7 data, odd number of data in my data set, I can find middle value easily, right? If I have 7 data set, 7 entries in my data set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर मैंने arrange किया है, let's say low to high in ascending order, then ये जो 4th place पे data value है, ये median हो गया. What if I have even number of entries in my data set? What is that then I do then, Sarah? Sir, n by 2 it's the observation. So let's say I have 16 values in my data set. Then median will be n by 2th value, right? नहीं, 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 नहीं. अब आप 16 का n by 2th करोगे तो 8th value देना चाहिए आपको. But after arranging. Oh, Yes, after arranging. so we will take sum of middle two numbers and divide by 2. Correct, correct. So what you will do is, if there are even number of data set, you will find n by 2th value. Please also find n by 2th plus 1th value, n by 2 plus 1th value. So 16 ये आएगा 8th value और एक लेना 9th value और इन दोनों का एवरेज लेना. ये जो आएगा ये मीडियन होगा. या कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, ये तो अरेंज्ड ही नहीं है. तो अगर इवन नंबर ऑफ डेटा सेट होगा तो n by 2th फाइंड करो, n by 2 plus 1th फाइंड करो और इन दोनों वैल्यू का मिडिल नंबर निकालो, इन दोनों का एवरेज निकालो, वो मीडियन होगा. which means सारा the value of median may not be in the data set. इसमें हमेशा value of median is in data set. बट अगर इवन वाला निकालोगे तो आप 20 की दो वैल्यूज लेंगे विच इज n by 2 and n by 2 plus 1th वैल्यू विच इज 8th and 9th इन दिस केस, इन दोनों का एवरेज. तो इनका एवरेज हो सकता है कि आपके डेटा सेट में ये वैल्यू हो सकता है मीडियन की वैल्यू डेटा सेट में हो ही नहीं. समझ में आ गया? आफ्टर अरेंजिंग, ये तो प्री कंडीशन है, एवरीथिंग हैज टू बी अरेंज्ड फर्स्ट. दिस इज प्री कंडीशन. Ms. Kumawat, thank you for joining today, but you're joining late and you're not putting on your video. Yes. So I was just not able to get in the class. क्या? You were not? Able to join, sir. Was अच्छा. not connected. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी वीडियो ऑन करो एंड वी आर डूइंग चैप्टर 9. सो दिस इज मीन मीडियन मोड गाइस. अब है ना, मैं मीडियन का कॉन्सेप्ट उठा के सबसे पहले बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कंप्लीट कर रहा हूँ. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में हमने परसेंटाइल और क्वार्टाइल देखा था क्या केसर चारुल? Yes, sir. हाँ ठीक है. तो अब वापस आते हैं इस पे. सो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट says that a data is given to you in some format. The format goes like this. ये फॉर्मेट अभी मैं समझा देता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को ना क्वार्टाइल और ये सब समझाया है. मतलब इट कुड ऑल्सो लुक एसिमेट्रिक. अगर आप देखोगे तो अभी आपको ये एसिमेट्रिक डेटा सेट जैसा दिख रहा होगा. ये बीच में एक लाइन दिख रही है बट वो बीच में नहीं है इन अ वे. एंड देन देयर इज अ नंबर लाइन एंड देन इसके नीचे दे. तो मैं डेटा सेट लेता हूँ SAT scores at UT for last 4 years.
Okay, guys. If you understand, this is called box and whisker plot. ये है box. These are the whiskers, मूछें for this box. And there's this line. How do you interpret? Interpret, the box has 4 parts. I'm going to the interpretation now. The box has 4 parts. The first part, यहाँ पे ये जो part है, this is your top 25% data. मतलब ये box already arranged है भाई. This part is your next 25% data. ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. जो मैंने ब्राउन से लिखा है ये क्वेश्चन में हो सकता है, बट ये कोई भी लिखेगा नहीं जो मैं आपको दे रहा हूँ. This part is next 25% data, and this part is last 25% data. तो देखोगे टोटल 100% डेटा हो गया. पिछले 4 साल में जितने भी बच्चे यूटी में पढ़े हैं उनका रियल एसएटी स्कोर मैंने प्लॉट किया है. हाँ जी, क्लियर है? अब इसको देख के मुझे कुछ इंटरप्रिटेशंस देते जाओ. क्या क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकते हो अगर मैंने आपको ये डेटा दिया तो? अनम्यूट करो और बोलो. Various interpretations can be given. बोलो. Sara, go first. Sir, highest value observed is 1570. Lowest हाईएस्ट स्कोर किसी भी बच्चे का एसएटी में जो यूटी में आया है वो है 1570. करेक्ट. और क्या बोल सकते हैं? बोलिए पाटिल साहब. So there were 25% of students between 1480 to 1570. कितने परसेंट? 25%. आर बिटवीन 1480 to 1570. सॉरी नहीं. कोई इंप्रूव करना चाहेगा पाटिल साहब के स्टेटमेंट को? She is saying there are 25% students, 25% UT students between 1480 to 1570. Is she correct? चारुल को तो कोई आइडिया ही नहीं ऐसा लग रहा है. हाँ, 50%. गुड. 50%. केसर देखो ना, 25% प्लस 25%. 50% स्टूडेंट्स का स्कोर 1480 से ज्यादा है यूटी में 4 साल के डेटा के हिसाब से. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर डेटा. एनी अदर इंटरप्रिटेशन गाइस? बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बट और दो मुझे, ये दो के अलावा. आई हैव गॉट 2, वन फ्रॉम केसर, वन फ्रॉम सारा. कैन आई हैव सम मोर प्लीज? Sir, most frequent observation becomes 1500. मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन मतलब मोड इज 1500. नहीं, डॉट्स एंड व्हिस्कर प्लॉट. सॉरी, You put the dots on it, right? अरे वो डॉट तो मैंने ना ये एज के लिए पुट किया है. ये भी मुझे ब्लू से करना चाहिए कि ये वाला जो एज है ये 1500 का. तो लर्निंग इज बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट नेवर गिव्स यू मोड. बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट से बता ही नहीं सकते कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर क्या है. ठीक है गाइस, चलो देखो गलत आंसर से भी ना सीखने को ही मिलता है. तो मोड कभी भी नहीं बता पाओगे इस डेटा से, ये याद रखना. और क्या बता सकते हो? मीडियन स्कोर क्या है बता सकते हो क्या मुझे? मीडियन स्कोर क्या है यूटी स्टूडेंट का, बता सकते हो क्या आप ये देख के? Come on guys, what is the median score of UT student? Is this information there? Can you tell what is median? Arranged value में middle most. Middle most मतलब 50% वैल्यू ऊपर 50% वैल्यू नीचे. बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट से मीडियन मिलता है क्या? बताओ क्या है? 1480. Yes, brilliant, very good. ये जो लाइन होती है ना गाइस, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज मीडियन. 50% वैल्यूज ऊपर है ना 1480 के, और 50% नीचे है, तो ये मीडियन होगा कि नहीं सारा? दिस इज द मीडियन वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. चारुल कुमावत with a star, are you listening?
तुमने स्टार क्यों लगा रखा है नाम के आगे? Actually, I'm listening. हाँ ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ. व्हाट इज द मीन स्कोर? मीन स्कोर ऑफ UT स्टूडेंट्स ऑन SAT. ये मीडियन वाला पॉइंट नोट कर लिया ना सबने? हाँ चलो, अब मीन बताओ. मोड नहीं निकाल सकते. मीडियन का वैल्यू, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है बॉक्स के अंदर, ये हमेशा मीडियन देती है. ये कभी बॉक्स के बीच में हो सकती है, कभी बॉक्स के बीच में नहीं हो सकती है, जैसे अभी था. सारा, केसर एंड चारुल, मीन क्या है? व्हाट इज द मीन स्कोर? 1410. मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. मीन जानने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स. राइट? क्या मैंने आपको बताया यूटी में 4 साल में कितने बच्चे पढ़ के पास हुए हैं जिन्होंने एसएटी दिया है? मैंने आपको डिनोमिनेटर बताया ही नहीं है. क्या मैंने आपको इंडिविजुअल स्कोर बताया है? x1 x2 x3 xn तक ये स्कोर्स बताए हैं? नहीं बताया है. तो क्या आप सबमिशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो आप क्या मीन निकाल सकते हो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से? नहीं निकाल सकते. आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड. राइट गर्ल्स? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. What is the least score of any student at UT in SAT in last 4 years? क्या ये निकाल सकते हैं? 1100. 1100. परफेक्ट. ठीक है, ये क्लियर हुआ. बट अभी भी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है. अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूं. तो बेसिक चीजें मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं. मीन एंड मोड नहीं निकाल सकते. मीडियन ये बीच वाली लाइन से मिलेगा. मीडियन के ऊपर 50% वैल्यूज है, मीडियन के नीचे 50% वैल्यूज है. ये एक नंबर लाइन है जो कि एक अरेंज्ड ऑर्डर में है. इतना क्लियर होने के बाद गाइस वी मूव ऑन टू नेक्स्ट फ्यू कॉन्सेप्ट. ये जो एज है, हाउ डू आई मेंशन दिस? मैं ना इस पे मेरे साथ साथ देखते जाना अभी स्क्रीन पे. दिस एज इज कॉल्ड Q3 and this edge out here is called Q1. This is quartile 1, this is quartile 3. Needless to say median वाला line is quartile 2 क्योंकि वो बीच की लाइन है. ओके, अब अगर ये Q3 Q1 आ रहा है, let me make a statement. Less, I should say, more than 25% of students at UT score less than 1400 का score. True या false? I'll repeat. More than 25% of students at UT score more than. मालूम नहीं क्या बोला मैंने. I'm changing. More than 25% of students. So sorry. Let me rephrase it. चलो, ट्रू या फॉल्स बोलना है. More than 25% of students at UT score less than 1400 score. True या false? More than 25% of students score less than 1400. False. False. एंड ये तो पहले से ही इसने मुंडी हिला दी थी कि नहीं ये ट्रू नहीं है. सारा ने करेक्ट, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है. बिकॉज 1400 मोर देन 25% स्कोर लेस देन, नहीं नहीं नहीं, लेस देन 25%, लेस देन 1400 तो एग्जैक्टली 25% है. राइट गाइस? इसी तरह से इससे ट्रू एंड फॉल्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. अब मैं Q3 और Q1 पे आता हूँ. क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3. क्वार्टाइल 1 वो क्वार्टाइल है जिसके नीचे 25% वैल्यू है और ऊपर 75% वैल्यू है. क्वार्टाइल 3 वो मार्क है जिसके नीचे 75% वैल्यू है और ऊपर 25% वैल्यू. राइट?
So there is something in statistics which is called as इंटर-क्वार्टाइल रेंज। ये क्या होता है? इंटर-क्वार्टाइल रेंज आप फाइंड करते हैं Q3 माइनस Q1, ये होता है इंटर-क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1, आगे वाले एज का वैल्यू माइनस पीछे वाले एज का वैल्यू। ये विस्कर्स की वैल्यू मत ले लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विस्कर्स का वैल्यू। ओके गाइस, ये Q0 है बेसिकली, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ये एज का वैल्यूज। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर साल कुछ बच्चे रियल एसएटी में करके आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इंटर क्वार्टाइल गलत निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं अरे हाँ दैट्स ट्रू सर, मिस हो गया, विस्कर्स नहीं एज, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इंटर क्वार्टाइल की वैल्यू बताओ। 100. 100, 1500 minus 1400 is 100. Interquartile range IQR for this data set is 100. Right, oh guys? Next concept. Outlier. What do you mean by outlier? ये हमने शायद पहले भी पढ़ा होगा, ये बंद करना क्या? Outlier का क्या मतलब होता है? It does not follow the tendency or the trend. Which doesn't follow the tendency, will not follow the class, will not follow whatever data says. वो सोसाइटी से अलग, डेटा से अलग किसी टेंडेंसी या ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स में भी ऑलमोस्ट इसका मतलब यही है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी इसका मतलब यही है। आउटलायर वो डेटा वैल्यू जो गिवन डेटा सेट की टेंडेंसी को, ट्रेंड को, बिहेवियर को फॉलो नहीं करे। तो आउटलायर कैसे निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में? There is something called as 1.5 rule for outlier. ये समझ लेते हैं फटाफट, and then we'll go to questions. बहुत देर से मैं ज्ञान दे रहा हूं तो अभी क्वेश्चंस पे जाते हैं इसके बाद। देखो भैया, आउटलायर दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो आउटलायर जो हायर से ऊपर बिहेव करे, समवेयर हायर साइड से ऊपर डेटा हो, और एक वो जो लोअर से नीचे कहीं हो। ओके, सो लोअर आउटलायर कैसे निकालते हैं? लेट्स फाइंड आउट दैट फर्स्ट। लोअर आउटलायर is equal to क्या होता है? is equal to Q1 minus 1.5 times IQR। तो बताओ मुझे, हमारे डेटा सेट में लोअर आउटलायर का वैल्यू क्या होगा? 1400। हाँ जी, 1400। लोअर आउटलायर का नहीं, 1400 1250। 1250. any value which is less than this value, कोई भी वैल्यू जो इससे कम होगी उसको हम लोअर आउटलायर बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हायर आउटलायर पे। Q3 plus 1.5 IQR, बोलो ये क्या है? 1650. 1650. Any value which is greater than 1650 will be an outlier value in this data set. अब ये मत मुझे बोलना कि सर 1600 से तो ऊपर स्कोर आ ही नहीं सकता। आई एग्री नहीं आ सकता, तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट में शायद हायर आउटलायर कोई होगा ही नहीं। बट अगर किसी मान लो डेटा सेट में 1600 के ऊपर पॉसिबल है, एसएटी स्कोर नहीं है, वो कुछ और है, डॉलर्स अर्न पर वीक है, पर मंथ है, अर्निंग ऑफ पीपल हमने मैप किया है पर वीक, और वहां पे अगर 1650 से कोई ज्यादा वैल्यू होगा तो हायर एंड का आउटलायर होगा। समझ में आ गया? और लोअर एंड निकालना है, हायर एंड निकालना है, ये आउटलायर वैल्यूज होंगी। दिस इज ऑल, बस खत्म हो गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये इतना सब अगर आपको आता है, एनी क्वेश्चन ऑन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट वी विल बी एबल टू हैंडल।
This is the scope of the theory that you must know with respect to box and whisker plot. Right, people? Can we go ahead? कुछ क्वेश्चंस कर लें इस पे पहले, उसके बाद मीन मीडियन मोड ये सब पढ़ते हैं. ठीक है, चलो. Since you have granted me that, मैं remove spotlight करता हूँ. कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, नहीं तो we do some problems from essay on box and whisker plot. Anything, Sarah? चलो, let's test our understanding. Do you see this chapter 9 का PPT दिखता है क्या आपको? हाँ, दिखता है. Okay. Yes. So let's go to box and whisker plot के questions पहले जाते हैं. First problem on your screen from your book, question number 35 है. Screen से करना है तो screen पे भी है. करो. Let me give you 1 minute. Nothing to calculate. Question देखो, डब्बे को देखो and solve it. Above 25% on gyms in Shanesville have more than what number of gym members? Send your answers privately in chat box. Everyone मत करना, मुझे privately भेजना, and then we will discuss. Clara and Kesar, answer is correct. Miss Kumawat, waiting for you. About 25% of gyms in Shanesville have more than what number of gym members? Very good. We start with you, Charul. I said very good because you are giving me an opportunity to discuss this. Unmute karo. Yes, sir. 64 पे आते हैं. तुमने ये आंसर मार्क किया है. पहले तो ये बताओ, एंड ओनली चारुल विल रिस्पॉन्ड. ये जो 64 है, what is it signifying? स्पेशल है 64 कुछ इस डेटा में. क्या सिग्निफाई कर रहा है? मीडियन. मीडियन बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? Middlemost value. Middlemost value. What do you mean by middlemost value? 50% value above this, 50% value below this. Right, Charul? ये मतलब एक ये आंसर तो तुम कभी मार्क नहीं करोगी अगर इतना सा समझ में आ गया तो. क्वेश्चन क्या बोलता है? The box plot suggests that about 25%. ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमने शायद पढ़ा नहीं है इसको. Of gyms in Shanesville have more than, कुछ भी हो, आंसर 64 तो नहीं हो सकता क्योंकि 64 के साथ तो 50% वैल्यू अटैच्ड है. 50% ऊपर, 50% नीचे. बोलो. तो ये तो आंसर नहीं बोलोगी ना तुम. ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बोल सकती हो 56, 70. तो अब देखो इसके ऊपर कितनी वैल्यूज हैं? इस एज के ऊपर हाउ मच वैल्यू डू यू हैव? 25%. सो कैन आई से 25% of gyms in this area have more than 70 people. यही तो पूछा है. आंसर इज डी. हाँ चारुल. Yes, sir. तो आपने जो दिया वो मीडियन का वैल्यू था, मीडियन नहीं पूछा है. ये आइडेंटिफाई कर पाई तुम? हाँ. व्हाट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज? IQR का क्या वैल्यू है इस डेटा सेट के लिए? एनीबडी एंड एवरीबडी, कोई भी बोलो. 14. 70 minus 56, right? Yes, sir. What is the maximum number of members in any particular gym? 76. 76. Minimum number of members in any one gym? 50. 50. है कि नहीं? Yes, sir. Yes. चलो let's do one more. एक और करते हैं. अच्छा है, ये गलतियां यहाँ होंगी ना तो फिर एग्जाम में नहीं होगी. अभी समझ में आ गया आपको. मीडियन दिया. अगर मैंने पूछा होता चारुल, what is the mean average number of members per gym?
बताओ क्या वैल्यू है? एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स पर जिम इन दिस काउंटी। सर मीन निकाल ही नहीं सकते। मीन निकाल नहीं सकते, आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। मीन होगा तो जरूर, बट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। चलो भैया, खान एकेडमी लेवल 4 क्वेश्चन, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, आई गिव यू 2 मिनट्स, करो। How many high outliers are there in the data set? बहुत स्पेसिफिकली पूछा है, हाई आउटलायर्स। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को गाइस 5 नंबर समरी भी बोलते हैं। वो जो सेकंड वाला ग्राफिक है वो 5 नंबर समरी आप देखोगे तो एक्चुअली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ही है। यही सब होता है ना बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में, मिन, मैक्स, Q1, Q3, मीडियन। Send your answers privately, please. ओ भेज दिया आप लोगों ने? So, am I seeing this correctly? हाँ, आप तीनों ने एक ही ऑप्शन को आंसर किया है। Okay, so this calls for some discussion now. Let me invite Sara Das first. Sara Das से चालू करते हैं। The dot plot on left top shows, ठीक है, number of songs on each album in Sal's collection. Each dot represent a different album. Left bottom is 5 number summary, जिसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोल सकते हो, for this data. According to 1.5 IQR rule, for outliers, how many high outliers are there? Sara, let's go with IQR first. मुझे बताओ IQR क्या निकाला है आपने? What is the value of IQR? So 13 minus 9, 4. 4. तो 1.5 IQR करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6, है ना? 6. High outlier would be any value 13 plus 6, any value which is greater than 19. Yes, sir. Greater than 19 एक ही एल्बम है जिसमें greater than 19 songs हैं. Answer is 1. Because इस एल्बम में 20 songs हैं और greater than 19 अगर कोई भी एल्बम होगा तो वो high outlier होगा. Answer is 1. Guys, clear है? Yes, Sarah. Sir, जैसे 10 पे there are like 4 dots on top of it. If 20 also had say 2 or 3 dots above it, I would have added that no then. Again, अगर 20 में कितने dots होते हैं? 2 dots. हाँ, अगर 2 dots होते और हमें Yes. तो आंसर 2 हो जाता ना फिर. Absolutely, yes. Answer 2 हो जाता because each dot represents a data set. And one data set मतलब एक album. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चारुल विल हेल्प अस। चारुल, ये वाला जो डेटा सेट है ना जिसपे मैंने ये एरो बनाया है, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? One album on 11. One album on 11. थोड़ा सा और एक्सपेंड करो। One album on 11 मतलब? Like number line पे 11 point पे मतलब songs. So there is one album with 11 songs. There are a couple of albums with 12 songs. So answer is, Sarah, answer to your question is yes. If there would have been 2 dots, answer would have been 2 outliers. ये पक्का है। ठीक है, आगे बढ़े। Now I don't have anything आगे, I think ये 2 क्वेश्चन मुझे आपको कराना था, तो अब हम जाएंगे वापस। मीन मीडियन मोड गाइस हम पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन मोड पे आते हैं। वी कम डाउन टू क्विकली ये करते हैं।
Question number 2 from your book. Certain school K classes with n students each. Total P pencils. How many pencils are there for each student? Sarah correct. Kesar correct. And Charul correct. आप तीनों का correct है, मैं ये discuss नहीं कर रहा हूँ. But in case you want me to discuss, I'll be more than happy. Discuss करना है. अगर आप सिर्फ ये देख लोगे ना कि total number of students को denominator में आना है, because you are talking about per student, तो you will realize कि elimination से खत्म हो जाएगा. ये तो per pencil आ गया, नीचे P आ गया. यहाँ पे if you look at this, ये students तो हैं but total number of students नहीं है. ये पर क्लास आ गया इन अ वे. ये क्लास कैसे आ गया सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर में? देयर इज ओनली वन डिनोमिनेटर व्हिच इज मेकिंग सेंस. आंसर इज दिस. ओके, ये वाला करना है कि हाँ करना है. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. 2 full minutes. क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर बुक. केसर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया जून के लिए? हाँ सर. ओके. Which of the following could be arithmetic mean of numbers in the list? Let me know when done. Shall we do this together? क्या हुआ?
मैं करूं इसको? So if you help me with the data of the question, I'll try and do this. So the question says there are 7 numbers. Consider integers and not real numbers. And then there are 7 numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The least number being 2, the highest number being 20. ये भी दिया हुआ है ना? Median of this set is 6. तो जो median होगा वो 4th value पे होगा. बोलो. So let me say this is 6. Least, अगर मैं इसको ascending order में arrange करूं, 2 would come here and 20 would come here. Given that mode of data is 3, मतलब most occurring value is 3. तो अगर अरेंज करेंगे तो एक 3 यहां आएगा, दूसरा 3 यहां आएगा, और कोई जगह ही नहीं है. अब ये दोनों वैल्यू 6 से बड़ी है, 20 से छोटी है, बट आई डोंट नो व्हाट आर दीज वैल्यूज. इससे ज्यादा दिया नहीं है. दे आर सेइंग अगर ये वाला कंडीशन है अमंग 7, 8.5 एंड 10 है ना, इनमें से कौन सी एवरेज पॉसिबल है, 1 और मेनी, विच एवरेजेस आर पॉसिबल. तो 3 पार्ट कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 7. अगर एवरेज 7 है तो व्हाट वुड बी सम ऑफ दीज नंबर्स? इफ एवरेज इज 7, व्हाट वुड बी सम ऑफ दीज नंबर्स? 49. So can I say let this part be x and let this part be y, and x cannot be equal to y. Why? क्योंकि 3 जो है वही मोड है. अगर x equal to y हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. तो x is not equal to y. So can I say अगर sum 7 है तो 2 plus 3 5 plus 3 8 plus 6 14 plus 20, 34 plus x plus y should be 49. बोलो guys. And x plus y should be 15. 49 minus 34. अब x plus y, give me 2 values such that their sum is 15 and the x cannot be equal to y. 2 values बताओ x और y की ऐसी. 8 and 7. So 7, 8. अगर x 7 है, y 8 है, everything is respected, तो 7 तो possible है. 7 mean हो सकता है. Let's come down to 10. अगर mean 10 है, what would be sum of 7 numbers? 70. हाँ जी? 70. 70. So similarly, 34 plus x plus y is equal to 70. Or still better, x plus y is equal to 36. 70 minus 34. X और y का 2 possible value बताओ, where x is not equal to y and sum is 36. Possible है क्या कुछ? बोलो ना. Possible है. X can be 17 and y can be 19. और यहाँ पे 17 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा. All condition respected ही possible है. Let's come down to second one, 8.5. अगर 8.5 mean है, तो what will be sum of numbers? 59.5. Very good, 59.5. तो इसका मतलब 34 plus x plus y is 59.5 और x plus y is equal to 25.5. बोलो. What is x? इंटीजर है एक. y इंटीजर है. टॉप लाइन पढ़ना क्वेश्चन का, ये भी इंटीजर है. Can 2 integers add up to give you a decimal? नहीं. तो मतलब 8.5 तो कभी पॉसिबल है ही नहीं. Answer is Roman 1 and Roman 3. Am I clear? तो ये क्वेश्चन मोड का भी था, ये क्वेश्चन मीडियन का भी था. हाँ, मीडियन का भी था और ये एवरेज का भी था. तीनों कॉन्सेप्ट लग गए इसमें. आगे चलें. दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम SAT वर्बटिम. ये SAT का ही प्रॉब्लम है. ये वाला करना है क्या? हाँ करना है. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब तो ना SAT में सभी क्वेश्चंस में कैलकुलेटर अलाउड होता है, सिंस इट हैज गॉन डिजिटल.
Anyway, you can use calculator if you want to. 16th problem. But मुझे नहीं लगता calculator की जरूरत है. You'll be wasting time. 1 minute. Send your answers privately, please. What is the lowest score she can get from the remaining 2 judges if still she wants to finish first? Remaining 2 में से lowest score क्या आ सकता है किसी एक जज से? To win, she needs a mean of 5.8. Sarah, correct. चलो चारुल केसर. Correct, Kesar. Good. Minimum from any one judge that she can get. I'm waiting for Charul and then we will discuss. So all 3 you have got it right. अब मुझे बताओ डिस्कशन करना है तो करेंगे, नहीं तो आई गो अहेड. आ गया समझ में? आगे जा सकते हैं? हाँ चारुल? ओके. ये वाला दिस इज सिमिलर टू 16th. चलो करते हैं. 17th problem from your book. Interesting question. First 10 ratings average is given. Lowest value that one can get from 11th rating. So that overall average is 85.
What happened, guys? Lot of time. 11th वाला का minimum value क्या दे सकता है वो देना है आपको. Least rating the 11th person can give. Okay. ये जो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं चैट में, ये सिर्फ आपको दिख रहा है? हाँ सारा, आप लोग को दिख रहा है मैंने सारा को क्या यस या नो भेजा है? नहीं दिख रहा है, तो ये सिर्फ सारा को दिख रहा है. अच्छा, तो ऐसा भी कर सकते हैं फिर तो. एंड यस, करेक्ट, ऑल थ्री यू हैव गॉट इट राइट. गुड. डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? कर लेंगे आप? ये हो गया है मतलब? ओके, ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट, इवन इफ यू हैव गॉट इट सर राइट, इजियर मेथड है कोई इजियर मेथड. इसका? मुझे ना पहले आप आपका मेथड बताओ. चलो, सो you tell me your method. How have you done this? गैलरी में आते हैं और स्पॉटलाइट मेरे से हटाते हैं. रिमूव स्पॉटलाइट. बोलो सारा. Let's have your method first. So first thing they told us was that the average of the ratings was 75. So अगर average 75 था and 10 first 10 में, that means the number should have been 750. From there Correct. I back. Then the second part they told was then for the first 20 ratings, the average has to be 85. So 85 multiplied by 20, I got 1700. अभी उन दोनों का difference निकाला 1700 and 750, मेरे को 950 आया. Now we had to find out कि like again 11th का minimum. 11th का क्या होता. मैंने 9th का पकड़ा और फिर किया like one less than that and then I did it. हाँ, so I think ये यहाँ तक I will agree with you. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? So like you said, now I need 950 more. I need 950 more. I need 950 more. And I have 10 more values to go. उसमें से 11th वाला minus कर दूं. So 9 value should be maximized. These are like 12 से लेके 20. और 11th वाले को मेरे को minimum निकालना है. तो इनको maximize करो, मतलब 100 marks दे सकते हैं. ये 9 people giving 100 marks each. ये 900 हो गए, बच गया 50 जो 11th वाला देगा. So maximize these values. ये पूरा 100 दो तो ये minimum मिलेगा. That's all I also know. मुझे और कोई इससे shortcut नहीं पता. This is what I know. चलो guys, so we go to one more problem and then for a break. ये करना है क्या? हाँ ये करना है. This is real SAT question. Let's solve this one. History test result, question number 12 from your book. Sam was only student absent on Tuesday. Receives a score of 95. What will be median score for the test? I don't think there's anything to calculate. Table देख के आंसर आ रहा है इसमें. 70. Thirty seconds. Tara and Charul. इन चारों आपको सिर्फ आंसर मुझे भेजना है. चलो.
नहीं. So this is crime. You cannot spend so much time on this problem. Sarah, let's do this together. Answer आ गया क्या कुछ? Are you nearing your answer? नहीं. Sarah, we do this together. And ये किसका आंसर है? चारुल का. Correct, Charul. So Sarah, we do this together. If you read the question, objective is to find median. How many values are there in the table, Sarah? Unmute karo. So 9 values. Nine nahi hai values. 100 occurring once, 95 occurring twice, 90 occurring 4 times. So that way there are 16 values. Okay. Sam was absent. He writes his test and उसको 95 आता है. तो can I say जो 95 वाला figure है ये 2 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा. Total number of values are 17. Which value will give me median? This is already arranged. ये descending में arranged है already, सारा. तो कौन से नंबर पे मुझे median मिलेगा? Which value will give me median? देखो स्क्रीन पे. 9th वैल्यू पे मिलेगा. अगर 17 वैल्यूज हो गई हैं अब तो. Let's come down to 9th value. This will be 1 plus 3 4 4 plus 4 8 वैल्यूज यहां तक खत्म हो जाएंगी. ये वाला जो वैल्यू है ये मेरा 9th वैल्यू है. This is the median. Answer is 85. Option C खत्म. तो चारुल आपने भी बहुत समय लिया एंड सारा यू टू. तो आप लोग क्या कर रहे थे इसमें? I didn't think. हाँ मैं पहले 9 को ले रही थी एज अ सेट, फिर मैंने बाद में इनको 16 लिया and plus 117 किया. Which you now realize कि it is not required, right? हाँ सारा. Same with you? No, I went from नीचे to ऊपर. I started calculate and then I got the calculation wrong. हाँ और कोई कैलकुलेशन एज सच है नहीं. इसको अरेंज करना है. डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो, मिडिल वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम. ओके, ऑन दिस नोट एंड केसर से मैंने इस पे बात इसलिए नहीं की बिकॉज शी सॉल्व्ड इट रियली क्विकली. आई एम होपिंग उसने वैसे ही किया है. 13 similar type of question and I give you similar time. 30 seconds and 15 seconds to understand. 45 seconds में करो. Time starts now. Take 1 minute. Could be any of the following except correct. And Charul also correct. Good. तो आप तीनों का करेक्ट है ये. Anything to solve here? Can we go to next problem then? ठीक है. This is SAT challenge problem. This is from one of the sample papers of SAT and this is grid-in question. आपको आंसर टाइप करके भेजना है मुझे. What is the median number of telephone lines in thousands? So I give you full minute to understand the data and then 5 seconds to answer the question. 65 seconds.
Alright. What is the median number of telephone lines in thousands? Yes, sir, Charul. Charul, waiting for you. नहीं करें इसको केसर हेल्प अस. So we have total number of dots equals to 28. And if we find median, so 14th and 15th dot will So give total एक करके चलते हैं केसर. So Charul, what she's saying is total 28 countries हैं because each dot represents a country. So 16 plus 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus 1 इसने सब ऐड कर दिया. ठीक है, टोटल 28 कंट्रीज है. अब ये अगर आप देखोगे तो एक तरह से एक ऑर्डर में ही अरेंज्ड है. 0 टेलीफोन लाइन से लेके 2000 टेलीफोन लाइंस, मतलब 2 मिलियन टेलीफोन लाइंस हो गई. इस तरह से अरेंज्ड है. ठीक है, हाँ चलो केसर आगे. Then for median, we take the middlemost of 28, so which is 14th and 15th dot. अब ये क्योंकि एक इवन नंबर है, इसका मिडिल नंबर निकालेंगे तो 14 आएगा, मगर इवन में मिडिल हमने अभी बात किया था n/2 प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू लेना पड़ेगा और इनका एवरेज लेना पड़ेगा. तो 14th वैल्यू का 14th डेटा सेट का वैल्यू एंड 15th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हम लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे. तो 14th value is 0 telephone lines, 15th value is also 0 telephone lines. इनका average will also be 0. So answer will be 0. Median is 0. चारुल समझ में आ गया? ये नहीं आया तो फिर से पूछो. समझ गया सर. ओके, आपने क्या मिस्टेक किया? सर मैं एक्स एक्सिस में ले रही थी वो मैं. हाँ, तो एक्स एक्सिस में वो ऑलरेडी अरेंज्ड है नंबर ऑफ टेलीफोन लाइंस और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ कंट्रीज है, वो भी ध्यान देना जरूरी है. ओके गाइस, गुड. चलो ये एक अच्छा चैलेंज प्रॉब्लम था एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएटी. दिस इज पक्का लास्ट एंड देन वी गो फॉर अ ब्रेक. 14th प्रॉब्लम, a combination of lot of concepts. I think mean and median दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन. कैलकुलेटर अलाउड and 2 minutes.
Wow. Very good. This is not an easy problem. Very good. तुम नीट का एग्जाम देने वाली हो? कभी है एग्जाम? May 7th. 7th, okay. Sarah, Charul, let me know if we should do this together. Okay. Yes, correct. Very good. क्या भेजा है तुमने मुझे? अच्छा, तुमने आंसर ही भेजा है. ओके, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा. आप तीनों ने ये कर लिया, मतलब मीन मीडियन को बच्चे से ग्रिप कर लिया. So let me know if you want me to solve this, but otherwise your answers are correct. Very good, guys. ठीक है, चारुल, you don't look happy. तुक्के से आया आंसर? सर मुझे 3 days से फीवर है, सो मैं थोड़ा डल हूँ. अच्छा, तो अभी तुम पैरासिटामोल लेके क्लास अटेंड कर रही हो? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तुमको जब तक ठीक लगे अटेंड करना, एंड यू जब भी तुमको लगे ज्यादा हो गया है तो यू टेक ऑफ. टेक केयर. चलो गाइस, तो यहाँ पे ना, अरे ये कर ही लेते हैं, अभी आ गया है तो. एंड कुछ भी लिखने करने को नहीं है. लुक एट दिस, 30 seconds. See if you can answer this. Just raise your hand, don't send me your answers. Raise your hand, मतलब यहाँ पे जैसे भी तुम लोग मुझे बता सकते हो. You have come to an answer, I will talk to you. Which of the following will not affect value of median? A, B, C, D. Okay, Sarah. I hope that was hand raise. Finger raise किया था तुमने, बट दिख गया मुझे. ठीक है. So Sarah, Kesar. Charul, let me know. Okay. So Sarah, you go first. Which option A, B, C, D में से बोलो? Cannot affect तो D लग रहा है. D as in Delhi, dog. Okay. Yeah. Okay, Kesar D. and Charul. D. Same. Yes. Okay. If you double each number, for sure, value of median will also get doubled. तो पक्का आंसर. If you increase each number by 10, same logic. Median भी 10 से बढ़ जाएगा. Increasing the smallest number. Now, if you increase the smallest number, you don't know कि वो कितना बढ़ेगा और कहाँ जाएगा, और हो सकता है वो median से भी बढ़ जाए and median change हो जाए. So you don't know. But if you increase the largest number, because it is at one extreme, go on increasing as much as you want to. Order will not change, and because order will not change, median will not change. Answer is D. So guys, we take a 5-minute का break and then we will meet again. ठीक है, चलो.